Now in weathering, the second most important type of the weathering is the chemical weathering. So in chemical weathering, in other word, we can say that the decomposition of the rocks. So उसमें जब रेन वाटर जो है उसमें सर्टन टाइप ऑफ जो कॉम्पोजिशन में मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी उसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें नाइट्रोजन भी है. सो दीज आर द परमानेंट गैसेस एंड वेरिएबल गैसेस. सो ऑल आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सो जब रेन वाटर में ये परमानेंट और वेरिएबल गैसेस अगर मिक्सचर में मौजूद हैं, so that type of water has an impact over the surface of the earth. But if surface is covered with the rocks which are actually under the condition of the chemical process, so this is actually called the chemical weathering. Now we have already discussed that it is a decomposition of the rocks and minerals. But it is very important in warm and wet type of climate, because in warmer area, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर इवेपोरेशन भी होती है और वहाँ बारिश भी ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं जिसे हम ख़त इस्तवा के इलाके कहते हैं, वहाँ पर जहाँ दर्जा हरारत ज़्यादा है वहाँ पर बारिशें भी ज़्यादा हैं. So it means that the warm and wet type of areas में we have the process which is under the decomposition. So this is actually a chemical process of weathering. So in chemical weathering, the process is enhanced by rainwater, which combines with carbon dioxide in the atmosphere to form an acidic solution. As this oozes through soils, it takes some minerals as calcium carbonate into solution. For example, limestone readily dissolves in acidic water. The chemical weathering of limestone produces a distinctive type of landscapes which are called the karst topography. So if the surface is covered with limestone and the rainwater has an impact over the surface, so we can see this slide के वो जो surface है उसमें holes नजर आ रहे हैं, and this is actually the limestone covered area. And after the rain water जो उसके ऊपर impact है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें क्योंकि मौजूद है, तो इस तरह से उसने इस सरफेस की जो लैंडस्केप है उसको चेंज कर दिया, एंड दैट इज कास्ट टोपोग्राफी. सो कास्ट टोपोग्राफी में ये हमें फीचर्स सर्टन नजर आते हैं जो उन एरियाज में मौजूद हैं जो कि लाइमस्टोन कवर्ड एरियाज हैं. इसमें चौक भी शामिल है कि वो एरिया जहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल या सॉफ्ट मिनरल मौजूद है, एंड द सॉफ्टेस्ट मिनरल इज चॉक. एंड चॉक से जो हमें वहाँ पर फीचर नज़र आते हैं वो इस तरह के सरफेस पे हमें नज़र आएंगे. नाउ दिस स्लाइड शोज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. यानी इसमें हमें क्योंकि एयर में या एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है और ऑक्सीजन जो है रेन वाटर में शामिल होकर जो सोल्यूशन बनाती है, जो उसमें जो प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेशन. So in chemical weathering, oxidation is the reaction of rock minerals with oxygen, because oxygen is present in air and mixed with rainwater, so changing the mineral composition of the rock. When rocks are oxidized in the area, they become less resistant to weathering. Iron, a commonly known mineral, becomes red or rusted color when oxidized. So in this slide, we can see two different minerals. This is actually the olivine, and in this type of mineral, iron is present. So due to the oxidation process of oxidation, we have green color. So this rock become weathered. And in this area, this is actually a rock which is actually composed with again the iron mineral, and it is one of the very important rock which is called the quartz. And quartz में iron मौजूद है. iron जो है ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर रस्टेड फॉर्म में चला गया, यानी इसको जंग लग गया. सो इस रॉक की डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई है, यानी ये वेदरिंग इसमें स्टार्ट हो गई है और ये रेजिस्टेंट हो गई रॉक, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें टूट फूट
शामिल हो जाएगी. So it means with the certain chemical process, one rock can be weathered due to certain type of minerals, and those minerals are actually under the process of change. So इसमें iron जो है उसमें role play कर रहा है. Now here we have a process of hydration, which is actually the absorption of water into a mineral structure. A good example of hydration is the absorption of water by anhydrides, resulting in the formation of gypsum. So this is actually anhydride और ये आपको gypsum, ये change gypsum में हो गया. So इसमें ना सिर्फ इसकी shape change हो गई है बल्कि इसमें volume में भी change आई है. So we have a process which is called hydration, expands not only the rocks in volume but also result in rock deformation. In this slide, 35% increase in the volume which result due to hydration. Now another type of chemical weathering is the hydrolysis. So hydrolysis is a chemical weathering process. Silicate and carbonate minerals, as hydrogen is a permanent gas in atmosphere, it mixes with rainwater and has a chemical reaction on minerals. In such reactions, pure water ionized slightly and react with silicate minerals. For example, feldspar is a relatively weathering resistant mineral, and when this mineral is completely hydrolyzed, clay mineral and quartz are produced. This clay mineral is called China clay. So the feldspar under the process of hydrolysis change into the clay mineral, China clay. So this is one of the type of the chemical weathering. So in chemical weathering, the human-induced activities are also playing a very dominant role. The burning of the fossil fuel and vehicle emissions create atmospheric pollution, so the nitrogen dioxide and sulfur dioxides are released, and compounds react within the atmosphere to form acidic rain. So क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से या मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो एमिशन है, व्हीकल से एमिशन है, इंडस्ट्री से एमिशंस हैं, सो ब्रिकलिन से एमिशंस हैं, सो वो एटमॉस्फेयर में तमाम जो गैसेस हैं जो कि कंटेमिनेशंस हैं एयर की, वो रेन वाटर में मिक्स होती हैं और इस तरह से वो रेन जो वाटर जो है एसिड रेन बन जाती है. और उसका जो इम्पैक्ट है जो सरफेस पे प्लांट लाइफ है या वहाँ पर एनिमल लाइफ है या इवन मैरीन लाइफ है और इवन ह्यूमन लाइफ है, उस पे उसका इम्पैक्ट है. सो दैट्स व्हाई the human induced activities are also prominent in the chemical process of the weathering.